So, welcome everyone. I hope you can hear my voice and see my screen. Let's begin the class today. I have started the recording. As I told you before, today we will be taking a look at a deep look at the basics of recursion, pointers, and how dynamic allocation works uh, in the C programming language. And this is essential because in data structures, you use dynamic allocation to get more memory for storing your information in different kinds of entities like nodes for big lists and nodes for graphs, etc. And dynamic allocation returns pointers, and you pass around pointers as identities of nodes, what they are, and more importantly, where they are. And recursion is kind of ubiquitous in data structures and on Earth. Be it binary trees, binary search screens, graphs, dynamic programming, divide and conquer. All of these paradigms of algorithms, they use recursion. So this is very, very important for us to go through the basics of it. When I say basics, I'm not just going to gloss over the syntax and conclude the class. We're doing a deep dive into these concepts. Okay, so let's begin. More and more students will keep joining, but let's get started. The screen is also voice is on. All right. So what is recursion? So recursion happens when a function calls itself. And before we go into the depths of recursion, what happens when a function calls another function? What happens? Can anyone give me some pointers on that? What happens when what function? Like the main function. Main is a function. That's the go-to function for C program. That is where your execution starts. But when main calls another function, let's just say to add two numbers. So it returns an integer and it takes two integers. So what is going on? Can someone give some pointers on the mechanism of this operation? Anyone? So a loop is created. What is created? A loop is created. A loop. Yes. So one function calls another function and loop is created. No, when a function calls itself. No. I'm just asking that when one function calls another function, what happens? What happens? Sir, the function called is executed first before the one that called it. That is all right. But I'm Sir, a stack is created. Okay. A stack is already there. Sure. And what happens on the stack? What is already there? What happens when the function is called? And what happens when the function finishes executing? So a new stack is created on the current stack. When it completes the task, then it returns back to the place where it was called. Correct. So Isan kind of gave an idea of what is going on. So when a program executes, any program on a computer, on a modern operating system, so every program, every process has its own stack. Right? Every thread has its own stack. And the stack is primarily used for function calls. So when a function is running, it has its own set of local variables, like things passed to it as arguments, and all the local variables that you create inside a function. Like you create a couple of integers, some pointers, some characters, whatnot. All of those are local to the function. When the function finishes executing, all of those things are wiped out from memory. So all of them are stored in the stack frame. Remember the term stack frame of that function. So if that is the only function in the program, that which happens to be the main function in C programs, then that is fine. All right. So the main function will start executing. It will get over, and that is the end of story. What if main calls a function, let's just say sum, which takes two integers and returns an integer? What would happen is that you would call the function add at some point. That is where main will stop
execute, will pause execution, right? A stack frame will be pushed on top of the stack. On top of the stack. Stack is a last in, first out structure. It's like a stack of books, right? You have the book for main. Now you keep another book for the sum function. And what do? And why do you do that? Why do you create a stack frame for the new function? To give it some space. Where else will it keep its local variables? Its scratch pad, its rough paper is that area. And what is there inside that stack frame? Its local variables are there. And the arguments in C are also considered as local variables. So the two numbers that main is going to pass to that function will be stored in the stack frame of the add function. They'll be stored. What else will be stored? The return address of this call will be stored. That is when the sum function finishes execution. From where will the main function resume execution? That has to be stored. So now the sum function starts executing. It can create even more local variables, like a sum variable, let's just say int sum. Okay? So that sum variable will also be stored on the stack frame. Then what will happen? Let's just say you do sum equal to a plus b. The sum variable inside the stack frame of the sum function will be updated. Then you say return sum. What will start executing? The stack frame for that function sum will be erased. It will be popped from the top of the stack. Last in, it came in last. That is the first one to go. So the book, the stack of books, for example, will be removed for the sum function. Okay. What then? Main will resume execution from where whatever return address was stored. So this is how function calls are made. Let's just say sum calls another function, that function calls another function. So all of these books or stack frames will be kept on top of each other. Okay. At some point, one function will return to the previous function. That function stack frame will be removed. Then the other function returns. Then this is called a stack unwinding. Build up the stack, then you pop the frames from top of the stack and you unwind the stack and you come back to the main function again. Is this clear to everybody? What I just said? Let's give you some kind of intuition how function calls work. Hello? Yes, sir. Okay. All right. The recursion is basically function calls, but the special case that a function calls itself. A function calls itself, but every time it calls itself, a new stack frame is created on top of the stack, okay, which has no relationship with the thing below it. Okay. The code is the same for the function, but the local variables are all new, fresh, tailor-made for the latest invocation of the function. Whatever is at the top, new local variables are made. That includes the argument to the function and the rest of the local variables that the function is going to use. All of those are new. They have no relationship to the previous one on the stack. Please keep that on the mind. Let's take an example here of the factorial function. Now, this lends itself as a very nice candidate for recursion. As you can see, when the program starts, we have the main function. So a stack frame for the main function is created on the stack. There is only one stack. A stack is not created every time you make a function. Stack is there. When the program starts, the stack is already there. A stack frame for main is created. So num is a local variable, result is a local variable. These two variables are also created on the stack frame. For main, 5 is assigned to that local variable. And this function call is made. Okay, then you will get the value for result, right? So this function call is made. What will happen? Main will pause execution. The return address here. This is what is going to be resumed, right? When you return. Basically, this assignment will be done. This is where we will try to return when factorial is done. What will happen? This address will be stored. And the stack frame for factorial is going to be created on top of
the stack frame for main. And fresh local variables are going to be given. What are the local variables here? Looks like only n is the only local variable here. And what value is going to be given to it? 5 is going to be assigned to that. Now, main is paused and factorial is running. Let's see what factorial will do when it runs. Is n equal to 0? No, it is 5 right now. Or is n equal to 1? Well, n equal to 1 will not be checked because this is true and the OR condition is short circuit. This is true in an OR condition. The right side is not checked. But this is not true here. This is not true here. So this will be checked. Both will be checked. N is 5. So both are false. All right. So what you do, you try to execute this line, this expression over here. So what do we do? Okay, 5 into, this is not known at this point of time. What happens? This function, factorial, calls itself with a different value of n. What is the value of n with which it is being called right now? 5. 5 minus 1, 4. Okay. It's been called with a value of 4. What happens? This factorial invocation, which was on top of main, will be paused. And another stack frame will be created on top of this factorial stack frame with a fresh value of n. Please keep this in mind, with a fresh value of n. And the value of n this time is going to be 4. Okay. Then again, we will start running the function again because the code is anyway the same. This is going to be false. What will happen? 4 into again factorial will be called. Another stack frame is going to be created. This way, multiple stack frames will be created on top of each other. At some point, n will become 1. Okay. When n becomes 1, you return a 1. That's it. That is the end of recursion. When you return, what happens? That stack frame is erased and the value is given to the caller. The stack frame just below it. What is it waiting on? This value here, right? 1 is returned. And what is the value of n here? It is going to be 2. 2 into factorial of 1, right? So now this value is already there. So what will this stack frame return? 2 into 1. So that stack frame is going to be removed. Right? This is how it is going to work. Look at this. Factorial 5 n equal to 5. What this does, it tries to return this value, but it cannot return it immediately. Why? Because this is not known. So what we try to do is we put this stack frame on top of the stack frame for 5. I mean, it's kind of going below it right now. You think of it as going on the top. Any direction is fine as long as you remain consistent. Now, what this is going to do is return this. Now, this is not known. Okay, another stack frame. Pause this, do this. Now, this is also not known. Do this. Another stack frame. Okay, this is also not known. Another stack frame. But here, n becomes 1. So we return this, right? When you return this stack frame is going to be removed. This function will resume execution because it was paused. But now we have the value for this. 2 into 1. Okay, and then it was returned. That this stack frame is also going to be removed. Now this will start execution, resume execution with the value 2. 3 into 2, 6. Okay, 6 into 4, 24. 24 into 5, 120. And 120 will be returned back to main. Is this idea making sense to you? Hello? Yes, sir. Okay, cool. Again, I'm just trying to make sure that you really get it and never forget till you die. Okay, for the next 100 years, you don't forget this. Because it is easy to kind of get confused. So, when you get time, I'll just not waste your time anymore. With at this point of time, it has probably become trivial for you. Maybe not at the beginning of the class, but you just go through this block. A lot of effort has been put into kind of making this content so that you make sure you read this whenever you have time. Okay, so now let's take a look at another recursive approach here to find the largest and the smallest element of an array. Well, what do you think we should do here? How can you do recursion? For recursion, you need to really break down the problem. Like factorial of n was n into factorial of n minus 1. Factorial of n minus, not n. Then it would be infinite. It is n minus 1. So you are breaking down the problem one by one.
or maybe by a half every time, or by some factor or some number. What you do here to be able to find the largest element in an array? Huh? So in recursion, you kind of do a little bit, and then you say, okay, I cannot do any more. You do the rest. Now that guy gets it and says, okay, I will do a little bit. You do the rest. Until the point where it becomes so easy. That is the base case where you say that, oh, that's it. I cannot give it to anyone else. I'll just do. Take a look at this function. Okay. This is a recursive function because it is calling itself. What does it get? It gets an array and the size of the array, because that is how to do it in C. Because this is going to be the address of the array where it begins. And the program does not know how long that array is, where is the boundary where the array ends. So you just pass the size of the array also, so that you don't end up going beyond the boundary of the array. And the size of the array is just 1. I give you an array with only one element. Isn't that the largest element? It is. That itself is going to be the largest element. So you return that number. See, the array has only one element. That is the largest element. But if that is not the case, what will you do? You say, find the largest element of the sub-array. Okay? Pass the same array, but pass a smaller size. And then you check if the element that you skipped and the max that came out of this recursive call, which one is bigger? If this is bigger, you return this. If this is bigger, you return this. All right? Is this kind of making sense to you? Of how, we have kind of made find largest do the job for us recursive instead of iteratively. Right? We kind of break it down one by one. Is this making sense to you? Yes, sir. Okay. All right. So I'll not waste any more time. I think, you guys kind of get recursion at this point of time. Just go through this and it will become much more clearer. Okay. Invest some time in reading. Only then you will become a better person, engineer, everything overall. Only reading is going to. Okay. All right. So let's visit the concept of pointers in C. Well, we'll revisit kind of, because I'm assuming that you know C programming and you probably already know what pointers are. So what are pointers? They store addresses. It's a pointer. It just points a finger and says, okay, that is where you are. I know where you live. Okay. It's kind of a threat. I know where you live. What can I do if I know where you live? Well, I can do anything I want. I can change your value. I can erase your value. I can tell others where you live. They can go and do, some damage to you. Static. Pointers are set to every C program because they get very common. So pointers kind of threaten both ways. They threaten what they're pointing to. They also threaten the program. Anyway, so when you define a pointer, you also define the type of the pointer. So this is a pointer. Why? Because you have this asterisk before the name of the variable, and pointers are also variables. And this is going to point to an integer. So this is pointer to an integer. This pointer is going to store an address. That address should be the address of an integer somewhere. This is a tracker pointer. There can be very different kinds of pointers. There can be pointers to structures. There can be pointers to arrays. There can be pointers to functions also. They will not be right. How do you assign addresses to pointers? Well, this is a variable. It is a variable. A local variable in a stack frame somewhere. And it has a value of 10. Okay. What does this mean? Its value is 10. But what is its address? That's not 10. It is whatever, wherever the program is, howsoever the operating system has loaded the program, you rarely have control over that. But you can know its value. How can you know its value? When you define a pointer to an integer and you use this operator and
when you put this in front of a variable, you get the address of that. Take that address and you store it in the pointer because that is what it is supposed to store. Makes sense? All right, assuming it does. And at some point, if nothing is making sense to you, just hit drop. Okay, that's what you're supposed to do. All right. Dereferencing pointers. What is the meaning of dereference? You have the address, go there and try to read its value or try to change its value. Okay? Go to stack code, variable, pointer stores the address, and you use the asterisk operator here. This is the dereference operator. So there are two uses of this operator as far as pointers are concerned. They are used to declare a pointer. They're also used to dereference a pointer. What does this mean? PTR is a pointer. It has got an address. Go to the address where it is. If this is there on the right side of an expression, if this is an R value, then you try to read it. This is there on the left side of an expression, then you try to set the value. This is there on the right side, you read the value, store it in this variable. This is there on the left side. If I were to write asterisk pointer equal to 20, what would happen? The value here in this variable is going to be changed to 20. Okay. Well, let's take a look at another example. It's a variable. This is a pointer. Some random garbage value would be there if you don't initialize this pointer to some random allocation, right? Don't use a pointer without initializing it. You might end up corrupting your program and it will probably end up in a segmentation fault. Try doing it sometime because not will damage your laptop or something. The program will just crash. That is the guarantee that the OS kind of gives you because every process is isolated from any other process. They cannot damage any memory area outside whenever has been strictly allocated to them. Okay. See here we give it the address of this variable. Okay. And we say address of the variable. And when you're printing addresses, you use %p. And you say this address of the variable because there's the address of the operator. I'm going to print the address of this variable. And this is also going to print the same thing because the pointer here also stores the address of that. The value of the variable is %p because it's an integer and it's going to print there. Okay. And this is again value, the dereference operator applied on the pointer. Does that mean? Go to the pointer, figure out what address is there in that pointer, go to that address and try to read the value. And that is going to be an integer value, right? Because address here is the address of bar and bar is an integer. So you use %v and you print. I hope this is clear. And this is how you change. There is a thread, right? Because I can know the address, I can go and change the value. This is on the left side of the expression. And we go there, whenever address is there in the pointer, and we change the value to 20. Set it to 20. It was 10 before, now it has become 20. And we didn't use var. What did we use? We used the address of var. Just load another variable, a pointer variable, called as PTR. And now if you go and print the value of var, you're going to get a new value, which is 20. All right? I'm not going to go through the explanation. This is for you to read. You are still confused, but if you need to use this before your exams are going to an interview or whatever, I mean, just getting bored, you work in this. Let's quickly look at pointer arithmetic. Okay. What about arithmetic? When you take two integers and add them, what do you get an integer? But what happens when you add, like let's just say, 1 to a pointer? What happens? Who can tell me? Now here, let's just say I have a pointer to an integer, and if I add 1 to the pointer, what will that? Who can tell me? If let's just say there is an integer variable which is stored at location 100, and integers are of size 4 bytes.
So it is stored at address 100. I have a pointer which stores that address, the address of 100. And if I add 1, I do ptr equal to ptr plus 1. What will be the new value of pointer? Any idea? सर लोकेशन उसके बाद वाले में जो होगा array का वो आएगा. हाँ, यहाँ पे तो अरे नहीं है, यहाँ पे ये इंटीजर को पॉइंट कर रहा था. और कैसे हमको पता कि वो इंटीजर को पॉइंट कर रहा था? क्योंकि उसका टाइप से हमें पता चल गया. From the type of the pointer, we will be able to figure out what it is pointing to. And whatever is its value right now, if you add a 1 to it, its value is going to increase by those many 5s, which is the size of this. Size of int is 4, as I told you. अगर उसमें 100 था तो वो 104 हो जाएगा. It is going to point to the last set, to the next location. That is how pointer arithmetic works. So here basically it's an array. And as you probably know from your C programming class, the name of the array is basically a pointer to the first element. That is where the array begins. So I can safely take this and put it into a pointer, an integer pointer. And I'm going to print the value stored at P. It's going to print 10 because that is what it points to. And if I do P++, because it's an integer pointer, it is now going to point to 20. It is going to go to point to 20. And if I print the value again, it's going to print 20. Because it will just move by those many bytes and point to the next integer. It is not going to necessarily point to the next location up, because that integer previously might have taken 4 or 8 bytes. Will jump and point to next. That is how pointer arithmetic works. What are null pointers? It points to nothing. This is a good way to initialize your pointers. When you declare a pointer, set it to null. If you are not going to assign it a value immediately, set it to. Otherwise, it will have a garbage. Later, you can check it against null to see if it has a valid address. If it does not, if it is supposed to have a value, you can just say pointer is null and exit the program. Right? Safe program in practice. Okay, what about double pointers? Since this is important. Double pointers. Pointer has an address of what? A regular variable. And where is the pointer stored? I mean, the pointer is stored somewhere because the pointer itself is a variable. Where is it stored? That must have an address, right? Is it not? If I know your address, I am also living somewhere, right? So someone else can know my address, right? And they are pointing to a pointer. Pointer is pointing. I am pointing at you. Okay, you are a variable. I'm pointing at you. I know your address. I am a pointer. But if someone else knows my address, they are a double pointer. Look at what's going on here. Variable has a value of 10. This is a pointer which has the address of variable. And this is a double pointer, 2 asterisks, which stores the address of this pointer. Okay. This is you, this is me, and this is that someone else that knows my address, right? So take a look at this. This is going to be very interesting. Value of 10, okay. Address of this variable stored in this pointer. Address of this pointer stored in pointer, okay. And you use the address operator and double pointer. That's why you use. What's going on here? Address of what? What is going to be printed? Wherever this variable is there on the stack, its address. Value of what? What will be printed? 10. Okay. Percentage P for address, percentage D for var. This is the address operator before var. So address will be printed. This is just plain var. So value will be there. Address of pointer. What is going to be printed? Wherever this pointer is in memory. I mean this variable, wherever it is there in the stack, that address is going to be printed here. So percentage P. Value stored in pointer. What is the value in this pointer? That is the address of this variable. That is exactly what we have stored inside this pointer. So if you just print the value of the pointer using percentage P, you will get the
address of the variable. But value pointed to by pointer, if you use the asterisk operator, that means we will go to pointer, tell it what is the address inside you, go to that address and print the value. Whose address is there inside pointer? Variable's address is there, so 10 will be printed. I hope you are there with me up until this is where things will get even more interesting. Address of PPTR. Address of PPTR. Now, this pointer is also a variable that also needs space. This is going to print the address of that. This is going to triple pointer level. This is going to triple pointer level. This is printing the address of a double pointer, right? If you want to store this address somewhere, we have to make a triple point. Anyway, value stored in PPTR, directly printing PPTR. What is the value inside that? That is the address of this pointer. That address will be printed. Value pointed to by PPTR. What is this? What will happen here? So whatever address is there in PPTR, whose address is that? This pointer's address. Go there and print its value. Now, what is the value of this pointer? It is the address of this variable. That will be printed. That is what is going to be printed. Value pointed to by the address stored in PPTR. So you can use double dereference. What is the meaning of this? First, this will be executed. What does that mean? Whatever is the address in PPTR, go to that address and get the value. Okay. What is that? PPTR points to this pointer. So the address stored in PPTR will be the address of this pointer. Okay. And the value here, what is going on? The value inside that. Okay. So it is going to be the value stored inside this point. What is that value? That is the address of this variable. So when you put an asterisk in front of that, what will happen? Sorry, move back. Right. Here. Yeah. What is there in PPTR? PPTR has the address of this pointer. Okay. Look at only this part. What is happening here? What does this mean? Go to PPTR. Whatever address is there, go to that address and get the value. Okay. Let's do that much first. Whatever address is there in PPTR, whose address is there? Pointer's address. Go to that address and get the value. Okay. We will go to that address and get the value. What is the value there? It is the address of this variable. All right. Now we have the address of the variable var. Now you put another asterisk in front of that. That means whatever is the address, go there, get its value. Whose address are we dealing with? The address of var. We will go to the address of var, get the value of 10. That is what is going to be there. Because it is a double pointer on var, you use two asterisks to be able to get the value. Is this making sense? Hello? Yes, sir. Okay. All right. To kind of make it clear here, let's just take a look at this. So the var variable is stored at address 100. Pointer is allocated at address 200. PPTR is allocated at address 3. var has a value of 10. When we make pointer get the address of var, we take the address of var and we store it here. When we make PPTR have the address of PTR, we get the address of PTR 200 and we store it. Right? That is how it works. PTR has the address of var and PPTR has the address of PTR. This is kind of how it works, right? Variable. सर Yes. सर वो परसेंटेज पे क्यों यूज करते हैं? अगर परसेंटेज डी भी देंगे तो भी तो उससे एड्रेस दिखता है. परसेंटेज डी साइन होता है, एड्रेसेस में कभी साइन नहीं होता, तो वो ओवरफ्लो कर सकता है, नेगेटिव नंबर्स दिखा सकता है कभी, व्हिच यू डोंट वांट, राइट? इसलिए परसेंटेज पी यूज करें. अच्छा सर और एक डाउट था कि ये जो डबल पॉइंटर है उसमें हम लोग टोडी एरे बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, उसी के लिए वो यूज होता है. अच्छा अच्छा ठीक है सर. ठीक है.
All right. तो यहाँ पे देख लूँ variable has addressed this, it has got a value. PTR points to variable, PPTR points to PTR, but PTR itself has a different address. PPTR has its own address. PPTR points to the pointer, so this address is stored here, and PTR points to variable, so this address is stored here. I hope this is making sense to all. So why would you use a double point? One thing is to create double dimensional arrays. They're also called as jagged arrays, in which it doesn't look like a square. So the first row can have like 2 elements, the second row can have 3 elements, the third row can have 1 element. So you can have an array which kind of looks weird. It's called a jagged array, like the edge of a knife. But that is a little bit complicated. I don't want to confuse you in this class. But another use case is to modify a pointer in a function. Now tell me, what is the use of a pointer? Why do we need a pointer, and when do we pass a pointer to a function? Look at that. Why do we pass a pointer to a function? सर वो साइज को चेंज कर सकते हैं अरे का? नहीं, अरे के साइज को चेंज नहीं करना है. हम एक फंक्शन में पॉइंटर इसलिए भेजते हैं क्योंकि जिसको वो पॉइंट करता है उसके वैल्यू को अगर हमको चेंज करना है, क्योंकि उसका पता हमको चलना चाहिए वो कहाँ पे. ठीक है. मेरे पास अगर एक फंक्शन है जो कि एक वैल्यू में 1 जोड़ता है, ऐड 1 वो करेगा, बहुत ही बेसिक फंक्शन. उसमें मैं एक वैल्यू पास करूं int a करके, मैं अंदर उसको करूं a++, तो क्या बाहर जो a का वैल्यू था वो चेंज हो जाएगा? चेंज नहीं. क्यों चेंज नहीं होगा? जब हमने वो फंक्शन कॉल किया था, जो int a था वो फंक्शन का लोकल वेरिएबल, उस लोकल वेरिएबल में मेन फंक्शन का जो a का वैल्यू था वो कॉपी किया गया. तुमने फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल की कॉपी को तुमने बढ़ा दिया 1 पे. जब तुमने फंक्शन को छोड़ दिया वो वैल्यू तो मिट गया फ्रेम से. मेन के फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होता उसको तुम हाथ लगा नहीं पाए. उसको अगर हाथ लगाना होगा तो उसका एड्रेस तुम्हें भेजना पड़ेगा, यानी कि उसका जो पॉइंटर है वो तुमको फंक्शन को भेजना पड़ेगा. जब पॉइंटर मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे? asterisk a इक्वल टू asterisk a प्लस 1. मतलब a के अंदर जो एड्रेस है वहां पे जाओ, मतलब मेन के पास जो वेरिएबल है वहां पे जाओ, उसका पता हमें पता है, उसका वैल्यू लो, उसके साथ 1 जोड़ो और उसके बाद उसको वहीं पे जाके स्टोर करो. ठीक है, तब तुम उसके वैल्यू को बदल सकते. That is why we send pointers to functions, because we want to modify the value. Okay, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर. ओके, अच्छा, तो ये हमें क्लियर है कि हम पॉइंटर को फंक्शन में क्यों भेज. अगर हमें कोई पॉइंटर को ही चेंज कर, अभी मैंने बोला कि अगर वेरिएबल को चेंज करना है उसके एड्रेस को भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर एक पॉइंटर को एक फंक्शन के अंदर चेंज करना है, पॉइंटर के एड्रेस को भेजना पड़ेगा. और पॉइंटर का एड्रेस क्या है? एक डबल पॉइंटर है कि नहीं? अगर एक वेरिएबल को बदलना है उसके एड्रेस को भेजो, वो एक पॉइंटर हो गया. लेकिन एक पॉइंटर को ही अगर चेंज करना है फंक्शन के अंदर तो पॉइंटर के पॉइंटर को भेजना पड़ेगा. और पॉइंटर का पॉइंटर जो होता है वो डबल पॉइंटर, वो अगर एक फंक्शन को दोगे तो वो पॉइंटर के वैल्यू को जाके तुम चेंज कर सकते हो फंक्शन के अंदर. ये अपने दिमाग में काट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक पॉइंटर बनाया है, इसको हमने नल पे सेट कर दिया और हमने ये वाला जो फंक्शन है उसको कॉल किया और उसको पास किया कि एड्रेस ऑफ पॉइंटर. पॉइंटर का जो एड्रेस होता है वो डबल पॉइंटर, क्योंकि वो पॉइंटर को पॉइंट. और यहाँ पे एलोकेट मेमोरी में हुआ क्या है, हमने वही किया, डबल पॉइंटर हमने लिया. और हमने क्या किया, यहाँ पे मालक किया, एक इंटीजर के साइज का एक जगह लिया हीप में और उसका एड्रेस हमने वापस किया. लेकिन उसके एड्रेस को कहां पे स्टोर करना चाहते हैं? इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं.
वो कैसे करेंगे इस फंक्शन के अंदर? क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो हमने दिया है इसको, तो हम क्या करेंगे, वो एड्रेस का जो वैल्यू है, यानी कि इस पॉइंटर के वैल्यू को तुम ये मैलॉक के रिटर्न को उस पे लेके तुम रख दो। ओके, और फिर उसके बाद हमने उसको 2 बार रेफरेंस किया है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये कहां जाएगा, सीधा ये के अंदर चला जाएगा। क्यों? 2 बार हमने इसको डीरेफरेंस किया है। मतलब एक बार करने से क्या होता है, ये इसके वैल्यू तक आता है और इसके अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया है, तो जो एड्रेस हमने मैलॉक से जो एड्रेस हमें मिला है वो हमने उसमें स्टोर कर दिया है। और दूसरे बार अगर हम डीरेफरेंस करेंगे, हम सीधा जाके हीप में जाके पहुंच जाएंगे और वहां पे जाके हमने 100 का वैल्यू स्टोर कर। Okay, not only did we get some space out of that heap, but we also stored a value of 100 in that area, and we were able to do that in a very synthetic way. कोई जरूरी नहीं है ऐसे करना, लेकिन मैं तुमको बस डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि कैसे काम करना है। ठीक, मैं फिर से बता, हमने एक पॉइंटर बनाया जो कि null है। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन इसके वैल्यू को सेट कर पाए, मतलब फंक्शन के अंदर इसका वैल्यू सेट हो पाए, चेंज हो पाए, नल से चेंज होकर कुछ और हो जाए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस पॉइंटर पास करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पॉइंटर पास करने से क्या चेंज कर सकते हैं, ये जिसको पॉइंट कर, लेकिन ये तो किसी को पॉइंट नहीं करा, ये नल है। ठीक है, लेकिन इसका अगर एड्रेस देंगे तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो पाएगा यहाँ पे। तो हमने पॉइंटर का एड्रेस दिया है, डबल पॉइंटर करके यहाँ पे मैलॉक करके हमने डायनामिक मेमोरी लिया है और हमको एक एड्रेस देगा मैलॉक कि यहाँ पे मैंने हीप में तुम्हारे लिए जगह बना के रखा है। वो एड्रेस हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, ये पॉइंटर के अंदर रखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये पॉइंटर का एड्रेस हमें पता है, हम उस एड्रेस में जाएंगे। तो ये हो गया, इसमें उस पॉइंटर का एड्रेस है और ये ऑपरेटर वही करता है कि उस एड्रेस में जाता है और कुछ स्टोर करता है। क्या स्टोर करेगा, जो यहाँ पे है वो लेके वहां पे स्टोर कर देगा। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये पॉइंटर के अंदर एक एड्रेस आ गया। कौन सा एड्रेस, डायनामिक मेमोरी जहां पे हमारे लिए जुगाड़ किया गया है 4 बाइट इंटीजर रखने के लिए, वो अभी यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर है? अच्छा सर, डाउट है, हम लोग जब नॉर्मल अगर int a is equals to 10 करते हैं और फिर से अगर a का वैल्यू को चेंज करना होता है कोई फंक्शन में, हाँ, अगर उसका रिटर्न टाइप void है तो तब भी हम लोग एंड करके उस वेरिएबल का नाम लिख के पास करते थे फंक्शन में। सर तो पॉइंटर के लिए भी एंड और वेरिएबल का नाम लिख के पास करने से हो जाता है? क्या हो गया? एंड मतलब जो इसमें जो ये पॉइंटर है हमारा, हाँ, इस केस में हमारा ये पॉइंटर है, तो इसमें हम लोग एड्रेस ऑफ पॉइंटर बस लिख के भेजने से हो जाता है, उसमें एस्टेरिस्क डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एस्टेरिस्क यहाँ पे क्यों डालोगे? एंड का काम है कि कोई भी चीज का एड्रेस दे दे, वो वेरिएबल हो, पॉइंटर हो, डबल पॉइंटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल हो, पॉइंटर हो, जो भी हो, सबका तो एड्रेस होता है ना। अच्छा, अगर डबल पॉइंटर भी होता तब भी हम लोग खाली एड्रेस ऑफ भेज दे, एंड करके भेज देते। तुम्हें कोई भी चीज का अगर तुमको एड्रेस भेजना हो तो उसके सामने एक एंड लगा दो, भले ही अच्छा। वेरिएबल हो या पॉइंटर। अगर तुम वेरिएबल का एड्रेस देते हो तो तुम वेरिएबल को चेंज कर सकते हो फंक्शन के अंदर। अगर तुम एक पॉइंटर का एड्रेस दे रहे हो तो वो पॉइंटर को तुम बदल सकते हो, ना ही खाली वो पॉइंटर को बदल सकते हो, वो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसको भी बदल सकते हो। मतलब सब कुछ बदल सकते हो, वहां से लेके आगे तक तुम सब बदल सकते हो। क्योंकि एक का एड्रेस पता चल गया, वहां से लेके तुम वो जिसको पॉइंट कर रहा है वहां तक जा सकते हो, उसके बाद वो जिसको पॉइंट कर रहा है वो सारे जगह पे तुम पहुंच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखो ये पॉइंटर है, हमने यहाँ पे पॉइंटर के एड्रेस को इसको दे दिया। ये पीपीटीआर में क्या है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर है, इसीलिए हमने 2 एस्टेरिस्क यहाँ पे लगाए हैं, ये बताने के लिए कंपाइलर को ये जो वेरिएबल है इसके अंदर एक पॉइंटर नहीं है, ये एक सादा वेरिएबल नहीं है, ये डबल पॉइंटर। इसके अंदर एक ऐसा एड्रेस है जो कि एक पॉइंटर का एड्रेस है, और वो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो एक इंटीजर को पॉइंट, ये डबल पॉइंटर, ये चेन। और फिर हमने ये डबल पॉइंटर को यूज करके इसके अंदर एक एड्रेस को स्टोर किया। ठीक है, अगर मान लो ये सिंगल पॉइंटर होता, अगर हम इसको ऐसे लिखते तो क्या होता, ये पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था वो वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता था।
तो यहाँ पे तुम बस ये मान लो कि ये पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है, इसका भी तो एक वैल्यू है, इसको भी तो हम सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे? उसका एड्रेस दे दो, उसका एड्रेस दे दो, फिर वहां पे वो उसको डीरेफरेंस करेगा। डीरेफरेंस करेगा मतलब क्या? ये पीपीटीआर में क्या है? पॉइंटर का एड्रेस है। स्टार क्या करेगा? वहां पे जाके छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा। इसको अगर तुम राइट साइड में रखोगे तो उसका वैल्यू रीड हो सकता है, इसको अगर तुम लेफ्ट साइड में रखोगे उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि उसका वैल्यू चेंज हो जाए, किसमें सेट हो? जो हमको मालक वापस करता है। तो ये लाइन चलने के बाद क्या होगा? अलग से जो एड्रेस मिला वो एड्रेस जाके ये पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक, और मालक ने क्या वापस किया? एक इंटीजर पॉइंटर वापस किया है, और इसका भी तो टाइप इंटीजर पॉइंटर ही है, चला गया। और इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं? ये पॉइंटर जिस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और वो पॉइंटर फिर जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू चेंज। दो बार डीरेफरेंस किया। ये पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, फिर वो और जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, और इसके अंदर किस चीज का एड्रेस है? जहां पे क्या हमारा डायनामिक मेमोरी है, और वो कितने साइज का है? एक इंटीजर का है। तो हमने एक इंटीजर लिया 100 और उसको लेके वहां पे स्टोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये इसको देखोगे तो फिर से पता चले। मैंने बहुत सोच समझ से इसको बनाया ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये तुमको कोई बताएगा नहीं, कोई बुक में तुमको ये नहीं मिलेगा, और क्लास में तो तुमको टीचर ठीक से इसको पढ़ाएंगे नहीं, और फिर इंटरव्यू में तुमको पूछ देगा कोई, फिर तुम बता नहीं पाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जानना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो 2 पैसे का कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं है। सीखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखो, ये कॉल करने के पहले, ये एलोकेट मेमोरी कॉल करने के पहले हमारे पास क्या था? एक पॉइंटर था। वो पॉइंटर जो था वो उसका भी घर कहीं पे है, और वो घर का पता क्या है? ये उसका घर का एड्रेस है। वो पॉइंटर अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा क्योंकि उसका वैल्यू अभी नल है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक पॉइंटर बनाया, उसका वैल्यू हमने नल पे सेट कर दिया। अभी हमने क्या किया? एलोकेट मेमोरी को कॉल किया, और एलोकेट मेमोरी का एक लोकल वेरिएबल है जो कि उसका आर्ग्यूमेंट है। ये देख लो, मैं फिर से ऊपर देखे तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है PPTR, ये डबल पॉइंटर है। क्यों? क्योंकि ये जो डबल पॉइंटर है ये पॉइंटर को पॉइंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया। ये PPTR जो है ये इस पॉइंटर को पॉइंट, ये PPTR जो है ये भी एक वेरिएबल है, इसका भी कहीं पे घर है और उसका भी एक एड्रेस है, और वो ये एड्रेस हो गया। इसका और इसका एड्रेस अलग है, एक जगह पे कैसे रख सकते हो? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। इसका एड्रेस अलग। इसके अंदर वैल्यू क्या है? हमने पास किया, क्या पास किया था इसको? हमने पास किया था इसको ये पॉइंटर का एड्रेस। ठीक है, और ये पॉइंटर का एड्रेस क्या था? 400। ये पॉइंटर जो है ये यहाँ पे है, तो वो उसका वैल्यू यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब तक इतना हुआ है। ठीक है, आर यू देयर विथ मी? यस नो? तक ऐसा Yes, sir. Yes, sir. प्रीटी गुड, ऑल राइट। चलो, हमने क्या किया है? अभी मेमोरी एलोकेट किया मैलक यूज करके। मैलक देखेगा कहां पे खाली जगह है, ईंट में टॉर्च लाइट लगा के, चलो उसको 600 पे एक जगह मिल गया, वहां पे उसने हमको 4 बाइट दिया, साइज ऑफ इंट, और ये जो एड्रेस है हमको वापस मिला। हम क्या चाहते हैं कि ये एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर में स्टोर हो जाए। कैसे स्टोर करेंगे? ये जो पॉइंटर का जो एड्रेस है ये हमारे पास है डबल पॉइंटर में, हम इसके सामने एक स्टार लगाएंगे, मतलब इस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है वहां पे जाओ, चले जाते हैं आगे इधर, और वहां पे जाके मैलक का जो रिटर्न वैल्यू है उसको लेके वहां पे स्टोर कर दो। कर दिया, आ गया 600 इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला लाइन भी चला है। ये इसका मतलब क्या है? ये पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है वहां पे जाओ, आ गए, एक स्टार का काम हो गया। उसके अंदर जो वैल्यू है उधर जाओ, ठीक है, 600 पे आ गए, उधर जाके 100 स्टोर कर दो, कर दिया।
ये समझे? यस सर। वेरी गुड। नहीं समझे तो ब्लॉग को पढ़ो, रिकॉर्डिंग को फिर से देखना, कोई तुमको समझाएगा नहीं इतने क्लियरली, कोई नहीं समझाएगा, आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता ये क्या होता है। हाँ, अभी देख लेते हैं कि डायनामिक मेमोरी क्या होता है। डायनामिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी में क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी जो होता है, जो कि हमारे लिए ऑलरेडी सेट कर देता है कौन? कंपाइलर। कंपाइलर पहले से बोलता है कि देखो जब ये फंक्शन चालू होगा, इसके अंदर ये सारे लोकल वेरिएबल्स है, ये सारा आर्ग्यूमेंट्स है, इनके लिए इतना इतना जगह लेके स्टैक पे तुम रखो, ठीक है? वो स्टैटिक एलोकेशन। ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, ये सारे स्ट्रिंग रिटर्न्स है, इसको डेटा सेक्शन में तुम जगह लेके रख लो। पहले से हमको पता है कितना साइज है, हमको पता है, उसके लिए जगह बनाते रहे। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि हमको डायनामिकली जगह चाहिए, एक यूजर से कुछ नंबर लेना है और यूजर को कितने नंबर देने हैं, उसको सप्लाई करना है, हमको तो पहले से पता नहीं होता। यूजर 1 नंबर दे सकता है, 5 लाख नंबर भी दे सकता है। हम क्या तो फिर 5 लाख का जगह ले लें, अगर वो 2 नंबर देगा तो बाकी 4 लाख कुछ 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 जगह तो फालतू में गया। तो इसीलिए हमको ये सिचुएशन अराइज कर सकता है, सिचुएशन माइट अराइज दैट यू डोंट नो हाउ मच स्पेस यू नीड until you start running the program. At compile time, when you are about to compile the program, you don't know how much space you need. But at runtime, you are only able to know how much space you want and you need. Then you need dynamic memory. On the fly, चलते चलते तुमको जगह बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनाओगे? स्टैक पे नहीं बना सकते, ठीक है? स्टैक पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बन सकता है, वेरिएबल लेंथ अरेज है सी के नए स्टैंडर्ड्स, लेकिन वो लिमिटेड है, वो स्टैक बहुत बड़ा नहीं कर सकते, वो ओवरफ्लो हो जाता है। लेकिन जो हीप होता है वो बहुत बड़ा जगह, वो गद्दा होता है, हीप नाम में ही है, बहुत बड़ा एक एरिया है, ठीक है? वहां पे तुम जगह ले सकते हो, जितना बड़ा जितना छोटा चाहिए, डायनामिक। क्या करोगे? जगह ले लो। कहाँ पे उसने तुमको जगह दिया? एड्रेस देगा ना कि ये तुम्हारा जगह है, वहां पे जाओ, तुम्हारा घर बनाओ। नहीं बताएगा कौन सा प्लॉट नंबर है, कौन से गली, कौन से चौराहे पे है, तो फिर कैसे जाके वहां पे तुम पहुंचोगे? तो एड्रेस भी तुमको चाहिए। तो कैसे इसको करें? हमने सी प्रोग्रामिंग में देखा था, फिर से मैं तुमको जल्दी 2 मिनट में बता दूं। यहाँ पे हमने पॉइंटर बनाया, इसके अंदर पता रहेगा कहाँ पे तुमको जगह मिला। और ये जो मैलक है, मेमोरी एलोकेट, ये क्या करता है? तुमको डायनामिकली मेमोरी देता है। कितना मेमोरी? जितना तुम उसको मांगोगे, कितना चाहिए हमको, एक इंटीजर मान लो यहाँ पे स्टोर करना है, हम साइज ऑफ का ऑपरेटर यूज करेंगे और इंट का टाइप दे देंगे, बोलेंगे एक इंटीजर का जो भी साइज है, प्रोग्राम चलने के टाइम 32 बिट मशीन में 4 बाइट हो सकता है, 64 बिट मशीन में 8 बाइट हो सकता है, पुराने कंप्यूटर में 2 बाइट हो सकता है, कितना भी हो। हमें पोर्टेबल कोड लिखना, एक बार कोड लिखेंगे हर जगह चलेंगे, तो साइज ऑफ यूज करेंगे, इंट लिखेंगे। यहाँ पे कभी गलती से 4 या 8 हार्ड कोड मत कर देना, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तुमने 4 हार्ड कोड कर दिया, लेकिन उसमें इंटीजर है 8 बाइट का, तो उसमें वो फिट नहीं आएगा, ठीक है? अगर 2 बाइट का है तो 4 में फिट आ जाएगा, लेकिन 4 बाइट का तुमने जगह लिया है और तुमने 8 बाइट का इंटीजर रख दिया, प्रोग्राम चलने के टाइम फिर वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। साइज ऑफ कर लो, हर टाइम चले। मालक को बोल दिया मुझे चाहिए 8 बाइट, क्या हो गया? फिर मालक ने क्या किया? वो ट्राई करेगा जगह ढूंढने के, गारंटी नहीं है कि जगह तुमको मिल जाएगा। अगर मोस्टली सक्सीड करता है, कर गया, तो वो एक वॉइड पॉइंटर वापस करता है, एक जेनरिक। उसको तो पता नहीं तुम क्या रखना चाहते हो, उसके अंदर तुम क्या रखोगे, मालक को कोई फर्क नहीं। वो क्या करेगा? तुमको तो शुरू का जो एड्रेस है, जहां से उसने जगह तुमको दिया है, तो फर्स्ट एड्रेस है उसका, वो तुमको वापस करेगा एज अ वॉइड पॉइंटर। इट्स अ जेनरिक पॉइंटर, इट कैन पॉइंट टू एनीथिंग। बट हमें तो वहां पे इंटीजर रखने का मतलब है ना, हमारे माइंड में इंटेंट ये है कि हमें वहां पे इंटीजर रखना है, ना कि फ्लोट रखना है। इंटीजर रखना है, हम उसको कास्ट कर देंगे, हम बोलेंगे ठीक है तुम्हारा एड्रेस जेनरिक भले ही हो, लेकिन हम उसको इंटीजर पॉइंटर बना के इसमें रखेंगे, पीटीआर में। ये इंटीजर पॉइंटर है, तो पीटीआर में उसका पता आ गया कि कहाँ पे हमको जगह मिला है। अब जाके चेक करेंगे कि भाई तुमको असली में एड्रेस मिला है कि फालतू में ऐसे ही तुम बोल रहे हो कि मेरे पास जगह मिल गया। बहुत से दलाल होते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास ये जगह है, वो जगह है, आप हमें पैसे दो, आपको हम करोड़पति बना देंगे। चेक करना पड़ता है कि इसमें कैसा है कि ऐसी हवा पे बात कर रहा है। चेक कर लो कि मालक ठीक से काम किया कि नहीं काम किया। अगर नहीं किया तो प्रोग्राम को बंद करो, एलोकेशन फेल। अगर कर गया तो जो करना है करो, वहां पे वैल्यू रखोगे, घर बनाएंगे, ये ऑपरेटर यूज कर लो। ये क्या है? डे रेफरेंस ऑपरेटर, मतलब पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है, जो कि एड्रेस है आपको मालक ने वापस किया है, वहां पे जाओ और ये लेफ्ट साइड में है तो उसका वैल्यू तुम 42% कर दो, ठीक है? और यहाँ पे हम उसका वैल्यू प्रिंट भी कर सकते हैं, ये हमें 42 प्रिंट करेगा, और ये क्या प्रिंट करेगा? जो एड्रेस जहाँ पे वो 42 स्टोर्ड है।
और हमेशा हमको जरूरी है कि हमको फ्री करना है। एक बार तुमने घर बनाया, उसके अंदर तुम रहे, जाने के टाइम घर वर छोड़ के तोड़ के निकल जाओ, कोई और वहां पे घर बनाएगा। चलो घर के एग्जाम्पल कर दो, मतलब खेती करना है तुमको, खेती करना है, तुमने खेती किया, फिर छोड़ दो, वहां पे तुम अपना सब कुछ निकाल के निकल, ट्रैक्टर वैक्टर निकाल के चलो, कोई और वहां पे काम करने आएगा। अगर फ्री नहीं करोगे तो मेमोरी लीक होता है। मेमोरी लीक मतलब वो जगह तुमने ले लिया, तुम्हारे पास वो पॉइंटर अभी है नहीं, और मालक किसी और को वो जगह दे भी नहीं सकते, क्योंकि वो इसको पता नहीं है कि तुम्हारा उसमें काम खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। तो वो मेमोरी लीक होता है, वो मेमोरी वो जगह किसी और को नहीं मिल सकता, तुम्हारे पास भी उसका पॉइंटर नहीं है, तुमको भी नहीं पता वो कहाँ पे था, कोई और को भी वो जगह दिया नहीं जाएगा, तो वो जगह वेस्ट हो मत करो। हमेशा काम खत्म होने के बाद वो एड्रेस को तुम फ्री को दे दो, वो उस जगह पे जाएगा, देखेगा अच्छा इतना जगह इसको दिया गया था, उसको वापस ले लो, कोई और पूछेगा तो उसको दे दे। ठीक है। तो एक प्रोसेस जब मेमोरी में लोड होता है और चलता है, तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कोड, जहाँ पे कि तुम्हारा जो कंपाइल्ड कोड है, जो मशीन लैंग्वेज का जो जो जो, जो इंस्ट्रक्शंस है मशीन लैंग्वेज में, वो सारे उसमें स्टोर होते हैं, उसमें एग्जीक्यूटेबल कोड। डेटा सेगमेंट में क्या होता है, जो ग्लोबल वेरिएबल्स है, जो कि कोई फंक्शन के बाहर लिखते हो, स्टैटिक वेरिएबल्स है, भले मैंने सी में तुमको पढ़ा नहीं था, स्टैटिक वेरिएबल्स इतना यूज नहीं होता। स्टैटिक वेरिएबल्स कभी मिटते नहीं है, वो स्टैक में स्टोर नहीं होते, वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होते हैं। हालांकि वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, लेकिन वो वैल्यू कभी उनका मतलब उड़ाया नहीं जाता, वो हमेशा रहता है। ठीक है। और हीप हो गया, जहां से कि मालक वगैरह अपना जगह तुम्हारे लिए ढूंढ के निकाल के थे। और स्टैक हो गया, जो कि हमने इस क्लास में पढ़ा था, इसमें क्या होता है, फंक्शन कॉल एक के ऊपर एक जाते रहते हैं, और ये हमारा रफ पेपर है, स्क्रैच बुक है लिखने के लिए कि चलो लोकल वेरिएबल का वैल्यू क्या है, काम खत्म करो, रिटर्न करो, फेंक दो उसको, रफ पेपर को। एग्जाम के बाद रफ पेपर को फेंक देते हैं ना, उसको फेंक। ठीक है। मान लो हमारा कोड का जो एड्रेस है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है, डेटा सेगमेंट थोड़ा सा बाद में शुरू हो रहा है, हीप थोड़ा सा बाद में शुरू हो रहा है, और जो स्टैक है वो सबसे एंड से शुरू होता है और वो ग्रोस डाउनवर्ड होता है। देखो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्टैक और हीप जो होता है ना, मान लो यहाँ पे कोड है, कोड के ऊपर तुमने डेटा रखा, डेटा के ऊपर तुमने हीप रखा, हीप के ऊपर स्टैक नहीं आता। स्टैक जो होता है ना वो सबसे ऊपर चला जाता है और वो नीचे ग्रो करता है। ठीक है। ये हो गया। फिर फ्रेम फ्रेम ऐसे वो हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस को ग्रो करता है, और जो हीप होता है वो लोअर एड्रेस से ऊपर के एड्रेस तक ग्रो करता है, और वो कभी कभी बीच में मिलते हैं, बीच में गैप है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, मतलब ध्यान में रखना है कि जो बहुत सारे मॉडर्न सिस्टम्स होते हैं, सब में ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट जगहों पे क्या होता है, सबसे नीचे कोड होता है, नीचे एड्रेसेस पे, फिर उसके ऊपर डेटा होता है, उसके ऊपर हीप होता है, हीप ऊपर ग्रो करता है, छोटे एड्रेसेस से ऊपर के एड्रेस तक जाता है। तो स्टैक होता है वो सबसे ऊपर रहता है लास्ट वाले एड्रेस के पास, और वो ऊपर से ऊपर के हाई एड्रेस से नीचे के एड्रेस तक ग्रो कर सकता है। ठीक है। मतलब तुम ये मान लो कि हमारा जो बुक का स्टैक है ना, ये मैग्नेटिक बुक है, इसमें मैग्नेट लगा है, छत तुम्हारा लोहे का बना है, तुमने बुक को ऊपर चिपका दिया, फिर उसके जो नीचे वाला बुक है वो नीचे चिपक रहा है, और वो ऊपर से नीचे तक ग्रो कर रहा है, ऐसे मान। यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोग्राम हमने देखा था, वहां पे हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल था। वो पॉइंटर वेरिएबल क्या है, वो एक लोकल वेरिएबल है, वो मेन के अंदर एक लोकल वेरिएबल। ठीक है। लोकल वेरिएबल है मतलब वो स्टैक में जाएगा, और उसको हमने एक एड्रेस दे दिया। ठीक है। और हमारे पास जो हीप से जो मालक ने हमको एक जो इंटीजर रखने के लिए जो जगह दिया, उसने ये वाला एड्रेस चुना जो कि हीप के अंदर है। तुम देखो कोड यहाँ पे शुरू हो रहा है, डेटा यहाँ पे शुरू हो रहा है, हीप यहाँ पे शुरू हो रहा है, और स्टैक यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है। और जब मालक कॉल होने के पहले मेन के स्टैक बस एक ही लोकल वेरिएबल था, जो कि इनिशियली अनइनिशियलाइज था, ये पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है। ये स्टैक के अंदर है, मेन के स्टैक के फ्रेम के अंदर लोकल वेरिएबल। जब मालक हमने कॉल किया तो क्या हो गया, हीप के अंदर एक जगह हमने ले लिया, और उसके अंदर हमने 42 वहां पे स्टोर किया, और ये जो पॉइंटर है ये अभी भी लोकल वेरिएबल है मेन का, लेकिन उसके अंदर एक एड्रेस आ गया। इसका एड्रेस आ गया, इसका एड्रेस आ गया। हीप के अंदर ये जो वैल्यू हमें मिला है ना, उसका एड्रेस हम ये पॉइंटर के अंदर स्टोर करें। पॉइंटर का एड्रेस क्या है, वो स्टैक में, पॉइंटर स्टैक में है, लेकिन पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर के अंदर जो वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है हीप। हर वेरिएबल के दो चीजें होते हैं, खुद का एड्रेस होता है वो कहाँ पे है, और वो वेरिएबल के अंदर क्या है, ये पॉइंटर।
पॉइंटर का एड्रेस है स्टैक मेन के स्टैक, उसके अंदर जो है जो वैल्यू है वो एक एड्रेस है, और वो एड्रेस किसका पता है? ये जो मालिक ने हमको वापस किया है जो हीप के अंदर है उसका एड्रेस। ठीक, ये क्लियर हुआ सबको? हेलो, यस सर। Yes, sir. चलो वो जो लिंक लिस्ट का है मैं वो लिंक लिस्ट के चैप्टर में तुमको कल से वी विल रिज्यूम लिंक लिस्ट when we are done with arrays and linked list, kind of a major chunk of your data structure portion is kind of done. After that, stacks, views, binary trees are not going to be very challenging. Yesterday I went to late code and I was trying to look at some of the like 40-50 problems from the beginning, and I was so happy to see कि जिन लोगों ने मैंने जितने प्रॉब्लम्स दिए 2 पॉइंटर टेक्निक यूज करके, स्लाइडिंग विंडो यूज करके, रिकर्शन यूज करके, बैक ट्रैकिंग यूज करके, जिसने भी किया होगा ना, तुम खुद आज रात को लेट कोड में जाओ। बहुत सारे बच्चों के लिए लेट कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करना एक सपना होता है, इट्स अ ड्रीम फॉर देम, बट यू हैविंग जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर राइट नाउ, I guarantee you if you go to late code and try to solve a few problems, you can easily solve them tonight. तुमको लग रहा होगा कि नहीं ये शायद ये सब क्या चल रहा है, लेकिन तुम मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, तुम ये कोर्स खत्म करो मेरे साथ, एट द एंड ऑफ इट तुम लीड कोड के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हो। ठीक है, अब आ रहे हो क्लास में, ध्यान दे रहे हो, मतलब यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर एंड यू वांट टू बी रियल कंप्यूटर साइंटिस्ट। कोई डिग्री लेके कोई नौकरी में घुसने वाले लोग नहीं हो, तुम लोग रिसर्च करोगे, तुम लोग नौकरी पे भी अच्छा काम करोगे, किताबें लिखोगे, पेपर पब्लिश करोगे और लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे। ठीक, चल मैं कल मिलता हूँ, इंटरेस्ट रिज्यूम फाइल। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. सर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।